हेलो फ्रेंड्स, टेक कोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 20 क्वेश्चंस की एक क्विज सी लैंग्वेज के ऊपर। आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, वन बाय वन आपको सभी क्वेश्चंस को करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। आपको 10 सेकंड में अपना आंसर फाइंड आउट करना है और 10 सेकंड के बाद अपने आंसर को चेक करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? Answer is C. Dennis Ritchie. How many types of loop in C? Answer is 3. Which of the following function is user defined? Answer is C. Main. In C, we used for input output. Answer is B. Scanf and printf. What is the range of int data type? Answer is C. Minus 32768 to plus 32767. What is the range of char data type? Answer is B. Minus 128 to plus 127. In which year C language was developed? Answer is A. 1972. Which type of language is C? Answer is C. Procedural oriented language. The format identifier %C is used for which data type? Answer is C. Char. Break statement is used for. Answer is A. Quit the current iteration. Is it possible to run program without main? Answer is A. Yes. Size of is A. Answer is D. Operator. Which of the following is a logical NOT operator? Answer is C. What is the default value of static variable? Answer is A. 0. Which of the following will not return a value? Answer is A. Void. Can we assign null on void pointer? Answer is A. Yes. Prototype of a function means. Answer is all. Float A10. What is the size of array? Answer is 40. Which of the following is not a valid storage class? Answer is C. Dynamic.
Which type of statement is break in C language? आंसर इज बी, जंप स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी 20 क्वेश्चंस की क्विज। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।